नमस्कार बहनों भाइयों नॉन बाइनरी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका चिल टाइम में एंड लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू इट. सो दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट थोड़ा करूँगा, खुद पे थोड़ा काम करूँगा एंड आई वांट टू गेट मोर disciplined, I want to get more healthy, I want to get more peace of mind and part of it was to read books. तो इस साल बाय द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो मैं अब तक 10 बुक्स रीड कर चुका हूँ. आई नो आई हैड टू मच फ्री टाइम. इफ यू नो यू नो. Anyway, so while I was reading some of these books, I decided that I had few thoughts about some of them, and I thought that would make a good chill time video. So here we are. मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना हिंदी में बात करूँ, पर मैं मोस्टली इंग्लिश में ही सोचता हूँ, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट. तो बिकॉज दिस इज चिल टाइम, आराम कीजिए, आराम से बात कीजिए. आप ऐसा हो तो मेरे साथ आर्ट बनाइए while you are listening to this in the background, and I hope मैं कुछ अच्छी बातें बोल पाऊँ, कुछ पॉजिटिविटी के कुछ बूंदे आपकी ज़िंदगी में ला पाऊँ. आई नो, वेरी क्रिंज. मूविंग ऑन, the first book which I want to talk about is a compilation. Is actually called New India Fiction by HarperCollins. HarperCollins एक बहुत बड़े पब्लिशिंग हाउस है और उन्होंने ये compilation of short stories रिलीज़ की है जिसमें इंडिया के अपकमिंग शॉर्ट स्टोरी राइटर्स और नॉवेलिस्ट को मौका मिला अपना काम प्रेजेंट करने का. एंड आई फाइंड इट एज अ गुड वे टू लर्न अबाउट न्यू अपकमिंग राइटर्स, especially in Indian fiction. I was very impressed and very amazed to find new authors जो अभी कंटेम्प्रेरी स्पेस में काम कर रहे हैं, फिक्शन के स्पेस में काम कर रहे हैं. देयर आर फ्यू sci-fi शॉर्ट स्टोरीज इन दिस कंपाइलेशन विच आई फाउंड रियली अमेजिंग. तो बिकॉज दिस आर शॉर्ट स्टोरीज, बिकॉज 2 पेज 3 पेज की स्टोरीज है, कुछ 4 5 6 पेज तक भी जाते हैं, कुछ 10 पेजेस तक भी जाते हैं. बट इट वॉज अ वेरी ईजी रीड. इट वॉज अ वेरी लाइक ईच स्टोरी इज सो डिफरेंट. तो क्योंकि ये सारी शॉर्ट स्टोरीज है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, तो मैं सोचा चलो हर कहानी का रिव्यू करते हैं. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इफ ब्रेन्स वॉज गैस बाय Abraham Varghese. This is the first story and this is a very like slice of life, growing up story from a young girl's perspective, and that's it. That's the review. So that's it. That's the review. Because maybe it's because it's a very cultural thing, like it's a very microcosm story, and from perspective of a part of culture which I have no familiarity with. तो maybe इसलिए मेरे को इतना समझ नहीं आया है, मेरे को वो इम्पैक्ट फील नहीं हुआ जो शायद किसी और को रीड होते वक्त हो. Moving on to story number 2, Diablo Baby by Geeta Hariharan. Amazing! What a beautiful story. It's a really I think this is the shortest story out of all of them. पर ये एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, प्रोज भी बोल सकते हो, लेकिन ये दिस स्टोरी फेल्ट लाइक अ पेंटिंग. ऑफ कोर्स मैं स्पॉइल नहीं करूँगा स्टोरीज को. आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप खुद ये बुक्स पढ़े. मैं लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूँगा अगर मैं ढूंढ पाता हूँ ये बुक को, बिकॉज दिस इज आई थिंक दिस अ क्वाइट ओल्ड बुक. Yeah, 2005. So this was compiled in 2005.
एंड इंडिया टुडे ग्रुप और हार्पर कॉलिंस का ये एक जॉइंट वेंचर है. एंड कुशवंत सिंह ने एडिट किया है, वो शायद जूरी पैनल में भी थे और उन्होंने इस बुक का इंट्रोडक्शन भी लिखा है. मुझे इस बुक का इंट्रोडक्शन बहुत फनी लगा. आई नो वी आर गोइंग ऑफ टॉपिक बट hey, this is chill time. We are just here to chill, and I'm just here to talk. So, तो मुझे ये बुक का इंट्रोडक्शन बड़ा फनी लगा. It's just 1.5 pages, and कुशवंत सिंह is just saying, have fun. 100 स्टोरीज है, पढ़ो, मज़े करो. मुझे बड़े मज़े आए ये पढ़ते हुए. मुझे आशा है आपको भी मज़े आएंगे इसे पढ़ते हुए. That's it. That's the whole introduction to this book, which is quite a refreshing in today's time, I must say. So yeah, so if brains were gas, sorry, I don't get it, but it was a nice read. But Diablo Baby is like, there are few favorites I have here, and Diablo Baby is one of them, just because this feels like a painting. जिस तरह से स्टोरी काफ़ी रियलिस्टिकली स्टार्ट होती है. स्टोरी काफ़ी बहुत सोशलिस्ट जैसी साउंड करती है. मैं ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट, पर वो एक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, एंड दैट कैरेक्टर, द एंडिंग इज सो एब्स्ट्रैक्ट, एंड द फैक्ट दैट इट्स सच अ शॉर्ट स्टोरी और इतने कम पेजेस में आप रियलिस्टिक अप्रोच से सीधा एब्स्ट्रैक्ट पे लेके जाते हो, was really inspiring to see. Or this is one of those stories which I feel like I would love to see being animated. Like, it's so nice, it's so good. Moving on, Encounters with Kodambakkam Haina by Vivek Narayan. This is also very slice of life story, but this is more about following a person, a retired person, and it's a very not caricature, but it's very like character driven. तो कहानी में आप कुछ किरदारों को फॉलो करते हो और फ्रॉम द फर्स्ट पेज जिस तरह से विवेक जी किरदार्स को, कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं, यू इमीडिएटली नो हु दिस पर्सन इज, and you must have seen this person before. Like, इतना familiar character है और उसके साथ एक scam हो जाता है, and hence the name Encounters with the Kodambakkam Haina. और ये एक रिटायर इंसान कैसे इस सिस्टम से होते हुए गुजरता है, अलग अलग कैरेक्टर से मिलता है, and it's a very sad, very grounded story. Sad to nahi kahunga, but it's a very grounded story, and you like following this person around. Like, this is the first story जिसको पढ़ के ऐसा लगा कि this would make a good collection of short stories. Like, Vivek ji can write like each encounter and compile them in like the zoo site तरह का book. मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ. मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को कहने वाला कि आपको आर्ट कैसे करना चाहिए. दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन से टू पीपल, स्पेशली आर्टिस्ट. बट या लाइक सो ग्राउंडेड, सो नाइस. This is one of those stories with more pages in this book, but it was very nice to go through the motions and seeing like each day और each time किस तरीके से पास होता है, and what can you learn from this incident. Next one, we have Unfaithful Servants by Manjula Padmanabhan. Sorry if I mispronounced the name. This is the first sci-fi of this collection. I'm sorry, but I'm not impressed. I'm really sorry. Don't get me wrong. Like, this is a good story. There's like, it's almost like in a dialogue manner,
like how both the characters are describing each other or how they are interacting with each other, and which is really really nice to see. And her dialogue writing is very nice, like the way she writes the dialogues is really nice. But overall story and especially the ending, शायद उसमें एक गलती मेरा भी है एज अ रीडर कि मैं एंडिंग से कुछ और ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था और मुझे कुछ और मिला, तो दैट कुड बी इट. पर द स्टोरी इज I'm not gonna spoil it, but if you are a fan of sci-fi and you watch a lot of sci-fi movies, आप ब्लेड रनर ले लीजिए, आप अकीरा ले लीजिए, या फिर आप नियॉन जेनेसिस ले लीजिए. लाइक आई नो 2 of them are just animes. ये एक स्टोरी है. आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, आई डोंट वांट टू साउंड रूड, पर आई wasn't impressed. Maybe because I've seen this kind of story played out in other manners. Maybe that's why. But yeah, like पर at the same time मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप साई-फाई में इंटरेस्ट रखते हैं या एंटर होना चाहते हैं, या फिर आप अपने किसी दोस्त को एनकरेज कर रहे हैं कि यार ये साई-फाई मूवीज़ देख ले और वो नहीं, या फिर ये साई-फाई बुक्स पढ़िए, लाइक डून is something which intimidates me. Like I haven't read Dune, but book देख के ही थोड़ा डर लगता है मेरे को कैसे पढ़ेंगे all that. But this is a good first step. Like I feel this is a good beginner's sci-fi story. Like you can give it to someone to read and say, okay, if this interests you, then we can venture further and read more books about it. So in that sense, Unfaithful Servants is a good story. Story is good, but I was expecting something more. So that's it. Madame Kitty by Navtej Sharma. This story has vibes. Madame Kitty is a slice of life story, and it felt very real. एंड अगर आप डिफरेंट सोसाइटी टाउनशिप में बड़े हुए तो आपने इस तरह का इंसिडेंट ज़रूर देखा होगा, और आप काफ़ी बार सोचते हो कि ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया होगा या क्या हुआ होगा. बट इज़ अ वेरी लाइक grounded story, very realistic story, but said in a way that it has vibes, if that makes sense. This felt like a monsoon short film. I know how I am, like मेरे reviews ऐसे ही टाइप के हो गए कि nice, good, this feels like a movie, this should be an animation show. But hey, that's how I think. But yeah, like Madam Kitty feels like a good 90s 2000s Bombay short film जहाँ पे constantly बारिश हो रही है throughout the film, and everything is blue for some reason. That vibes. So Madam Kitty is a good story. Like I was really like impressed. It made me think after reading the story. It hooks you because it's so real. Moving on, The Necklace by Manju Kapoor. This is, so ये मैं थोड़ा spoil करना चाहूँगा because this story needs some context. Impressive story, but the context is like it's historical drama, it's historical incidents. So it's just one incident that actually happened in British India. But Manju Kapoor is trying to decipher the drama behind it, and how it's basically about how British governors pre-independence India manipulated the crowd. That's the story about, and how and it's very well written, and it does make you think. And the whole story feels like a play, as I said, like a play. Like he's describing the environment, he's describing the officer or the dialogue. So क्या dialogue बदला हुआ,
even monologues are in there. Uh, so fitting all that in a short story is really like amazing. But yeah, like the necklace is it makes you think. And on the topic of it makes you think, The Scoop by Sankar Vedantam. So sad. That's it. That's really so sad. The Scoop. If so इस साल मैं कुछ ऐसे दोस्तों से मिला जो जर्नलिज्म में काम कर चुके हैं और उनके थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा और उन्होंने जिस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस बयान किए. अभी वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे पर वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे, थोड़े इंटर्नशिप किए. आई एम नॉट टेकिंग देयर नेम्स बिकॉज ऑफ आई रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी एंड यू शुड टू. पर उनसे मिलने के बाद उनके एक्सपीरियंस सुनने के बाद द स्कूप, ये स्टोरी हैज़ लेफ्ट अ मेजर इम्पैक्ट. अगर मैं उनसे नहीं मिलता और मैं सीधा सीधा स्टोरी पढ़ लेता तो मुझे इतना इम्पैक्ट फील नहीं होता जितना अब बिहाइंड द सीन कॉन्टेक्ट सुन के होता है. द स्कूप इज follows a journalist, reporter and his cameraman. और of course मैं ज़्यादा इसको spoil नहीं करना चाहूँगा पर it's a very realistic story, it's a very human story because आपको ना सिर्फ उस रिपोर्टर का या मेन कैरेक्टर का इंटरनल थॉट सुनने को मिलते पर आप ये भी देखते हो कि वो किस तरह से एक हैवी इस रिपोर्टिंग से डील करता है या फिर द behind the scenes of journalism or TV reporting, if that makes sense. And yeah, it's a very impactful story. It's giving Premchand. But yeah, like amazing story, makes you think and leaves an impact. Because अभी भी मैं सोच के मुझे ज़्यादा डिटेल्स याद है स्टोरी से बिकॉज इट्स सो वेल रिटन एंड it's so impactful. Moving on to my second favorite story and author, Alienation by Samit Basu. So funny. This is the sci-fi I'm looking for. This sci-fi comedy and man, like it's so weird that I can't even describe कि क्या होता है उसके अंदर. पर it's so refreshing. It's something different. It's something weird, of course. और शायद आप तुरंत used to नहीं होगे इस style of writing से. लेकिन भाई साहब बड़ा मज़ा आया and I would definitely search more works by Samit Basu and see if this Alienation को उन्होंने expand करके कोई बड़ा novel बनाया है कि नहीं, because I am hooked. I'm fully in support of Alienation and I would definitely look for more books by Samit Basu. And that's the real impact of this book is you find new authors which you may have heard or not heard of, or you may never find these books. Like I didn't know who Samit Basu was. तो और मैं जिस तरह के बुक स्टोर्स में जाता हूँ मैं आई एम अ वेरी लाइक फोकस शॉपर, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करता. मतलब मुझे कुछ अगर बुक दिख जाती है तो लगता है ओके दिस गुड, आई पिक इट. if it looks familiar to me I'll pick it, but I won't go around and buy something obscure or an author I haven't heard of. So this book is important in that way that I can find new authors like Samit Basu, like Sankar Vedantam, like Geeta Hariharan, like amazing authors, like amazing work. But yeah, Alienation, please turn it into a graphic novel or animated series or a novel, a big novel. I want to read the whole thing. आपने सिर्फ थोड़ा टेस्ट दिया है समित बसु जी. I want to read more. So moving on,
Ajis Miracle by Anita Rao Badami. After reading Alien Nation, Ajis Miracle ऐसा भाई तू वापस गली में आ जा वापस बहुत उड़ लिया. Ajis Miracle is a very grounded story, but it's not how do I say this? कुछ खास नहीं हुआ है स्टोरी के अंदर. कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं है स्टोरी के अंदर. सेम थिंग विद इफ ब्रेन्स वॉज गैस, उसके अंदर भी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है. हाँ एंड में थोड़ा ड्रामा होता है. Even like Madam Kitty, like nothing crazy happens, very slice of life, but it has vibes. But Ajis Miracle, nothing happens, and you are okay with it. Ajis Miracle is story of Aji and her granddaughter, and it goes through the whole Aji's life, and it's from the perspective of a narrator. So it feels like watching an episode of a sub TV show. Like that's the best way I can describe it without spoiling it. It feels like a good sub TV show, sub TV golden era. वाली vibe है. तो man, why am I losing words when it comes to Ajis Miracle? Nothing happens in the story. But it still was really nice to read it and leaves an impact. Why? But I think that's the real power of Anita Rao Badami as an author. कि जिस तरह से उन्होंने ये पूरा वर्ल्ड बनाया है, जिस तरह से उन्होंने ये 3-4 मकान और उसके परिवार वाले बताए कि एक गली में रहते हैं, उसमें एक आजी है जो कर रही है जो भी कर रही है, आजी बीइंग आजी. एंड आई थिंक दैट्स द यही स्टोरी का सार है. इट्स जस्ट आजी बीइंग आजी, एंड इट्स रियली फनी इन इट्स ओन वे. सो या, मूविंग ऑन from one funny story to another, Bollocks by Farooq Dhondi. Another author I would love to research on and find more books of. Bollocks, even the writing is very creative to me. Like the whole premise is really funny, but they take it so seriously. The characters take it so seriously. That's what makes it even funnier. So it's written in an email format. Okay, like there are two people exchanging emails और उसी के अंदर पूरी story है. But because they are writing emails, they can't be emotional, they can't be raw with their emotions, और कुछ भी नहीं लिख सकते. They still have to be professional and etiquette, and that's what makes it funny. Okay, like it's a situation जहाँ पे आप सीरियसली कैसे बात कर सकते हो, एंड स्टिल यू हैव टू बी इन कंडक्ट बिकॉज यू आर ऑन ईमेल. फोन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये ईमेल है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट सो फनी. सो मैन, Bollocks by Farooq Dhondi, I will definitely search this author and see if he has made more stories, because I would love to read more. And from comedy, let's go to tragedy. During the long riots, the fragrance of Katikura, Amitav Kumar. So sad. This is the last story of the book, and as the title says, during the long riots and the fragrance of Katikura. And मुझे इसका perspective बड़ा interesting लगा. It's written from the perspective of author looking back at his childhood, and as a child उसने क्या देखा काटीकुरा रीजन में जब दंगे फसाद हो रहे थे. And he describes like his father was a IAS, and उनके फैमिली इतनी अफेक्ट नहीं हुई जितने अदर लोग अफेक्ट हुए. And it's written from a very personal perspective. ज़्यादा फैक्ट्स की बातें नहीं की गई है कि ये टाइम पे ये हुआ ये वो. लाइक
it's very like, I was there, this happened, I don't know the technical details, and that's the real power of this story. Another, I think I can compare this with the necklace by Manju Kapoor, because it's a story about humanity and how things can stir up very easily, uh, and because and that makes it sad and very real. But that's why I think stories like this are important. You should feel sad, you should feel empathetic. आपको आप यही सब पढ़ के तो समझ पाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए दोबारा, और that's why stories like this are important. So what a variety of stories in one book. Like I have the list here, so I'm looking at it, and man, you got some slice of life, you got some comedy, few comedies, you got some very grounded stories which sometimes go abstract. You have a very realistic stories, you have historical drama, you have sci-fi, you have comedies. Like it, what a package. This book is Bhel Puri. Uh, even the color is Bhel Puri. Also, by the way, look at the cover. What a beautiful cover. Why not people make beautiful covers like this anymore? That was my PSA. Anyway, uh, so that's it. That's New India Fiction by HarperCollins, edited by Khuswant Singh. So thank you so much, and see you in the next one.